Mr. Najas asked us to, I would like to express, yeah. All right, hold it closer, yeah. I would like to express my unconditional solidarity with Sharjeel and everyone else who occupies the rare shoes of someone like Sharjeel. Because after all, the laws, the sedition law in the UAPA is being used again and again in our times with a certain kind of cold-blooded madness that this government embodies. And some of these people, their speech is heard, and some others. For instance, in Karnataka, some children were performing a play in criticism of the Citizenship Amendment Act, and they were charged with sedition. Whose speech is not even formed in the way that Sharjeel's speech today is actually something we can hear and we can echo. So the sedition law is being used in a way that is so insidious and so, like I said, with a kind of cold-blooded craziness, which means it's craziness and yet it's targeted, that we really need to come together and question the very basis, not just of these laws, but of the politics, the political regime that we're confronted with, which is indeed fascist. But then, to say fascist is the beginning. It doesn't explain anything. We need to explain what kind of fascism this is. So in a way, to use a word is also to escape from our responsibility. We say fascist and then it seems by saying it we become secular and, democratic. But that is not true. We must actually do two things. We must show what kind of fascism this is, and we must also show what is the way to oppose this fascism. And we must actually oppose actively. I'm afraid a lot of us are not quite doing that. We are using words and labels to partly escape that so-called gesture of unconditional solidarity in the real moment. And Sharjeel, in that sense, is the name of a real moment. In that sense, Sharjeel is today the name of history, our history. Because he is not simply one individual who said what he did, and we're going to come to that. But Sharjeel is also someone who embodies the aspirations and the desires of all people who refuse to give up on their right to resistance. And we must remember the history of constitutions. The right to resistance after the French Revolution was one of the first fundamental rights that was enshrined in that constitution. That it was taken away says something about the retreats of democracy, not about its glory. But that does not mean that the right to resistance is something that we can forget. The spirit of the right to resistance is the only spirit that can guide and make democracy a real word and not just a label. And in that sense, Sharjeel today is a visible and audible name of this resistance. I'm saying that surely here and in several other parts of our own society and country, there'll be so many names which are not audible, so many people who are not visible. And in that sense, Sharjeel is somebody who represents a certain kind of political window to our reality. And we must open as many windows as possible, but that takes courage. And one way of making that courage come alive is not to resort to easy given labels that we use without really thinking about them. Though they are very real, So for instance, both the question of secular and the question of fascism are very real questions. But they are questions, they are not simply pre-given answers. So along those lines, I'd like to say a few things today. Now, of course, Asif,
said that I'm going to speak about the history of sedition. Unfortunately, I do not have that kind of scholarship or that kind of expertise. So I'll not be able to talk about the history of sedition at all. But what I do know is something which I'd already always known in terms of my own basic reading through newspapers and other sorts of general, documents. But today, when Prasanna actually told us that there is absolutely no trace of anything, even within the law, that exists on sedition, which basically hinges on the question of incitement to violence, then that is something which actually all of us know. And yet, and that is the point that I'd like to talk about, yet the question of sedition seems to be something which is not a legal question anymore. It has become a kind of strange social question today. This is, I think, the agenda or the cold-blooded targeting of bringing a certain madness to our society that this government is actually achieving with terrifying success. That while we are debating the law, sedition is not a legal question anymore. Sedition has become a new subjective question, as if you can actually judge the character of people as seditious or not. That's why words that are actually brought into sedition, the discussion of sedition, are not available in the law at all. So, for instance, the word anti-national, the subjective word traitor, these are definitely not legally definable or legally, they can't be evaluated. And yet, and of course the media is an instrument of this, but it is doing something which is indeed the new mode of fascism that we have to contend with. We have to really be able to, grasp. The sedition today is not actually the simple accumulation of its legal history from the colonial times to now. I think it seems to me that it has actually broken into some new ground. And that new ground is the social ground, as if sedition is a question of a certain kind of individual character, a certain kind of individual trait that is hidden in people's bloods and people's genes. And that becomes partly, I think, vindicated when we look at the UAPL. So I was just before coming here, I had a class, but just a little time I had before the class, I was looking at the UAPL law. And of course, the main point of the UAPL law, the amendment, not the law, but the 2019 amendment is that it now gives the state the right to declare individuals terrorists. Till now, we had terrorist organization insofar as they could be identified and named as such. But now, we have a new amendment which says that individuals can be called terrorists. So now read this with the sedition law, and I think the law and the social configuration are showing us something which is very significant, which is that individuals can now be targeted as being carrying the virus, carrying the bad genes of a whole society, a whole community. This seems to me to be the most dangerous mode of fascist operation that this government is carrying out on our people. So that's why the question of identity is not accidental at all. People, and that's why the weakness of a mechanical secular vocabulary, which says, oh, don't say identity, don't say identity. No, you have not understood the meaning of identity then. Identity is not something which is being spoken of as merely a formal or a community identity. Identity is something which is being made into something like like an illness. The state is making some identities like they're pathologies, they're illnesses. They are in some kind of social genes, something as absurd as that. The historical genes of a people are as if bad genes. So identity is given to us as a pathology by the state. It is not we who are speaking in the language of identity. So simply to say there is no identity is really is the way of the ostrich, to put your head in the sand.
And then every identity is indeed a name. Every identity is a particular name of that identity. So that's why at a certain time it made sense for people to say we are all Jews. At another time it made sense for everyone on the streets demonstrating against fascism to say we are all Arabs. And that is why in a deeply Islamophobic world, all the oppressed will say we are all Muslim. It makes sense to say that. Because Muslim is not an identity which today is merely the actual community identity of people who belong to certain family or certain community or who are part of a certain religion. Muslim is a political identity, where the politics itself is a politics on the side of the state, a politics of oppression, on the side of the global system, a kind of imperial violence against a whole set of peoples based on a generalized global Islamophobia. And to that extent, when we say Muslim, it is the same thing as when we say Dalit, which is always an identity. In the very measure that it is oppressed, it is also a demand on behalf of the right to resistance to resist that very oppression. So Muslim then is both the name of political subjugation as much as a call to resist that very subjugation. So that's why the question of minority is not merely a question of quantitative minority. It is always a question of a certain existential minority. People whose existences are threatened by political oppression speak in the name of that very existence. So Muslim is the name of existence. So Sharjeel exists. That is the real point. And because he exists, he must not exist. And must not exist can mean many things. It can mean his speech must not exist. His thinking must not exist. His freedom must not exist. And every agency of power can be brought to bear against their existence. And if one says Muslim, then Muslim is that extremely precise and extremely delicate name, which is at the threshold of the violence of the state from one side and the right to resistance, or the speech which speaks in the name of right to resistance on the other. So absolutely without any difficulty, we can speak in the name of Muslim today. It seems to me. And it is not an identitarian question. It is not a question which goes against the fundamental spirit of secularism at all. So that's the first point that I wanted to make. But on the other side, the question which is the question of sedition seems to me to be something which is coming as the very, very dangerous and insidious and sort of conspiratorial politics, which is out in the streets. It's not a conspiracy anymore in the back room, but it's a conspiracy out on the streets, right out in the open, and yet it's a conspiracy where sedition has become this very strangely, this strangely circulating image of a certain people with a certain social genes who are fundamentally terroristic, who are fundamentally those ones who threaten, I don't know what. Threaten what? Love of the country. Love of the country. Desh droh. Or Desh se prem. A philosopher had once said, some years back, in the context of love of country, in the context of France, he said, yes, love of country. I love what is lovable. Someone said something? No, man. Oh, sorry. So the question of this kind of a certain conspiracy to denounce, defame, and violently implant a kind of character onto a people as tendentially terroristic or people who are intrinsically anti-country is something which is not a question of law at all, because the jurisprudence definitely, as
as the advocate so nicely showed us, the jurisprudence is far more emancipated. And yet the jurisprudence is partly helpless today. Why is it helpless today? Because it has been shifted to another terrain, which is the terrain of something like social denunciation. Something like a psychology which works through, as Ambedkar said, in the majoritarian Brahmanical system of our society, it doesn't work through a rational social logic. It works through the conspiratorial logic of gangs. So it's a gang logic. And gangs target people and give this kind of a logic of calling others that these are intrinsically enemies, others. And build a binary schematization कि ये लोग इधर और हम लोग उधर. But I would like to say something here. It works very well as a kind of polemics, violent polemics, particularly in election times like we are seeing, because the Delhi elections are around the corner. And what madness is going on. And Shaheen Bagh is being made the site of a certain, they are dishonoring Shaheen Bagh by making it an electoral theatre. Shaheen Bagh is much more than any election. Shaheen Bagh we will remember much beyond the hypocrisy of India has gone through 10,000 other elections. You know, but today they are making Shaheen Bagh the theatre of elections. Their conspiracy, which is an electoral conspiracy, is being implanted into Shaheen Bagh. And that is the biggest insult to this country. But all this is being done strangely, openly. You know, पहले ऐसा होता था कि बुरी चीजें रात के अंधेरे में करनी है, दिन के उजाले में अच्छी बातें करनी है. लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा. अब क्या हो रहा है कि दिन के उजाले में बुरी बात करनी है और बुरी बात जितनी करेंगे उतना हम अच्छा माने जाएंगे. ये कहां से आया? ये क्या हो रहा है? इसको मैं कह रहा हूं कोल्ड ब्लडेड मैडनेस. क्योंकि पागलपन में तो एक तरह का वो होना चाहिए ना कि हाथ पैर फेंक रहे, सर वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. ठंडे दिमाग से पागलपन के काम किए जा रहे हैं. ये क्या हो रहा है? दिन के उजाले में किया जा रहा है. तो ये बड़ी मुश्किल हालात है जब कानून की जो सोच है, जो काफी हद तक अच्छी सोच है, वो है, हम उसको बार बार दोहरा सकते हैं, लेकिन जैसे उसमें जान नहीं रही. और जान दूसरी तरफ है, जहां इस तरह का ठंडे दिमाग से ये जो मात जो फैलाया जा रहा है, उसमें जैसे ज्यादा जान है. लेकिन कानून जिसकी सोच हम सब जानते हैं, उसमें जान नहीं. इसमें इन हालात में हम क्या करें? तो यहाँ पर शर्जिल जैसा कोई, उसने एक तो, मैं तो सिर्फ ये दिमाग में मेरे आया जब मुझे बोलना था क्या बोलूं, तो मैंने सिर्फ एक लाइन सोची कि सपोज शर्जिल इज स्पीकिंग द ट्रूथ, ही इज राइट. बस इतनी अगर इतना ही पॉइंट. मतलब हम तो इस तरह से सोच रहे हैं ना, वर्स्ट केस सिनेरियो, कि अरे मान लो नहीं, वो जो कह रहा है वो तो उसमें गड़बड़ है, लेकिन सेडिशन तो नहीं होना चाहिए ना. सपोज हम बेस्ट केस सोचे कि वो सच बोल रहा है और सेडिशन तो नहीं होना चाहिए, तब क्या करेंगे? तो फैशिज्म तो मतलब वो तो हमारे बिल्कुल सर से नीचे, गले से और सर के बीच में कहीं फंसा हुआ है. लेकिन फिर सेक्युलर का क्या करेंगे? लिबरल का क्या करेंगे? डेमोक्रेसी का क्या करेंगे? अगर ये सिर्फ शब्द रह जाते हैं. और मेन स्ट्रीम पार्टीज का क्या करेंगे? तो शर्जिल ने ये बातें कही है जितना मैंने पढ़ा है. और इसीलिए क्योंकि शर्जिल ने वो ऑटोनॉमी से बात की थी, इसीलिए शाहीन बाग शर्जिल और आसिफ और बाकी लोगों की वजह से हो सका है, और उन महिलाओं के लिए हो सका है जो ऑटोनॉमस है, जो आजाद है. तभी तो हो सका है ना. जो राजनीति के इस पूरे इस पूरे खेल में खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जो मैंने जैसा कहा कि वो है, शाहीन बाग है. तो ये हो सका है क्योंकि ये आजादी का परिचय उन्होंने दिया है. तो अगर ऐसा है तो फिर इन हालात में इधर ये खुलकर लोगों के सामने बिना छुपे हर चीज को दिल से, दिमाग से, पब्लिकली, कलेक्टिवली, सामूहिक तरीके से बराबरी की बात दिल में रखते हुए
हम बातें कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उसी दिन के उजाले में ये ठंडे दिमाग वाला पागलपन हम पर बरसाया जा रहा है। तो what to do here? It seems to be the real difficult challenge today. क्योंकि clearly those forms which have been called out by brave people like Sharjeel, who are also paying the price for their courage, not just against fascism, which is obvious, but against all the given mechanical kind of solutions that we have, which don't work, but which only satisfy our kind of limited, mainstream egos. अगर ये हमारे लिए अब काम नहीं कर रहे हैं, या कम से कम वो हमें रास्ता नहीं दिखा सकते। यही तो हुआ है ना कि शाहीन बाग ने रास्ता दिखाया मेन स्ट्रीम पार्टीज को, और उनकी ज़रूरत है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको खारिज कर दो, लेकिन रास्ता कहीं और से आया, रास्ता उस ऑटोनॉमी से आया, और उस ऑटोनॉमी को बचाए रखने की ज़रूरत है। लेकिन ऑटोनॉमी को फैशिज्म तो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर ही रहा है और गोली चला रहा है, लेकिन बाकी लोग भी कहीं ना कहीं उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुश्किल आ गई है ना, इसीलिए मुस्लिम नाम से लोगों को परेशानी हो रही है कि ना आइडेंटिटी के चक्करों में मत आओ। इस परेशानी का क्या करें? मुझे लगता है हम सबको बड़े सीरियसली इस पर गौर करने की जरूरत है। मतलब सॉलिडारिटी और अनकंडीशनल सॉलिडारिटी तो बिल्कुल है, जो बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं यही इसी में जाहिर है, लेकिन इसके आगे भी इस अनकंडीशनल सॉलिडारिटी को ताकत बनाने की जरूरत है, और उसके लिए हमें किस तरह से सोचना है और क्या बातें करनी है, जो अभी तो मैं इतनी लंबी बात वैसे आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सवाल खड़ा करना ज़रूरी है। फिर भी मैं एक बात करूँगा, जो एक चीज़ जो हो रही है जिसमें मुझे लगता है बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसके बारे में I'd like to just mention it and finish, which is also something to do with the law, which is the other side. The sedition is a colonial law, and it is something which is deeply problematic, and at the most it gives us a perspective on the law which we like the advocate said, that at the most we kind of keep reading it down. The best people seem to read it down, and actually it also becomes a strange occasion for a certain kind of patronizing kind of judgment on people who come out on the streets and say what they have to say. So I remember जब ये उमर और खनैया वाला वो आया था, जब सेडिशन वाला मामला आया था, तो फली नरीमन ने शायद लिखा था, क्योंकि काफ़ी बड़े लीगल ल्यूमिनरी हैं, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने सेडिशन लॉ की पूरी गड़बड़ियों को साफ साफ लिखा था। लेकिन उसमें ये भी लिखा था कि देखिए कुछ ऐसे लोग होंगे JNU में या कहीं भी हो, जो इस तरह की बातें करेंगे जिसमें कोई वजन नहीं है, बल्कि गड़बड़ बातें हैं, लेकिन नहीं, उनके साथ भी हमको होना है ना। तो ये जो एक तरह का वो करना है, पैट्रोनाइज करना है, इसके बियॉन्ड जाकर सेडिशन लॉ को रीड डाउन ही नहीं करना, उसके फंडामेंटल पॉलिटिकल इंटेंट को सामने लाने की जरूरत है। क्योंकि पुराने कॉलोनियल लॉजिक में तो वो था, और लेकिन आज के लॉजिक में वो जिस तरह से काम कर रहा है, मुझे लगता है उसमें कुछ नई बात आ गई है जो बहुत चुनौतियां और मुश्किल पैदा कर रही है हमारे लिए। तो उस चीज को एक रास्ता मुझे लगता है थोड़ा बहुत हमारे सामने आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। वो है आज के ज़माने में पिछले शाहीन बाग और CAA के खिलाफ और NRC के खिलाफ जब से लोग सड़कों पे उतरे हैं, तब से प्रियम्बल की बात खूब आ रही है, और प्रियम्बल को बोला जा रहा है, प्रियम्बल को कलाकार लोग भी प्रियम्बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी कला में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह ने उसको बोला, बड़े खूबसूरत तरीके से अंग्रेज़ी में बोला। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये मेरे ख्याल में आया कि देखिए प्रियम्बल क्या कहता है। प्रियम्बल ये नहीं कहता कि वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तब जब आएगा तब सिटीजनशिप आएगी। कहता है वी द पीपल। तो मुझे लगता है जबकि हमको इस सिटीजनशिप की बात और उसकी लड़ाई बिल्कुल जारी रखनी है, हमें कहीं ना कहीं प्रियम्बल बोलते हुए, पीपल की जो बात है उसको वापस लाने की जरूरत है। हमको पीपल के नाम पर भी कुछ बातें करने की जरूरत है, और सिटीजन्स
के राइट्स को वापस लेने की तो जो बात है वो तो है ही, लेकिन पीपल जो सिटीजनशिप के भी ज़्यादा उस और मौलिक बात है, नींव पर है, उसको मुझे लगता है वापस लाने की ज़रूरत है। और इन अ सेंस ये जो पूरा एंटी फैशिस्ट, एंटी सेडिशन वगैरह वगैरह वो ये जो बातें हम कह रहे हैं, और एंटी यूएपीए जैसे एक्सट्रीमली वायलेंट लॉज, स्ट्रक्चरली वायलेंट लॉज के खिलाफ जो बोलने की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ सिटीजन्स के खिलाफ नहीं है, वो किसी के भी खिलाफ है। देखिए आर्टिकल 14 में, और एडवोकेट साहब मेरी बात को सही या गलत बता सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से ये है, आर्टिकल 14 जब कहता है कि लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, तब ये नहीं कहता कि सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। द सो कॉल्ड इलीगल इमिग्रेंट एंड द लीगल सिटीजन, सबके लिए, सब लॉ फंडामेंटली सबके लिए इक्वल है। उसके बाद सिटीजनशिप में कुछ प्रिविलेजेस और राइट्स अलग से होंगी, ड्यूटीज अलग से, वो एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लेकिन सिटीजन एक फंक्शनिंग चीज है। पर इक्वालिटी, पीपल, ये फंक्शनिंग सिर्फ नहीं है, ये है फंडामेंटल सोचने की चीज। अगर हम लोग सब पहले पीपल हैं तो फिर सिटीजन बन सकता है। सिटीजन से पीपल नहीं आता, पीपल से सिटीजन आता है। टू दैट एक्सटेंट मुझे लगता है कि, और ये बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन अजीब चीज है, कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तब लीगली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हर समय पॉलिटिकली बनता है, यानी कि जो कल को इलीगल इमिग्रेंट अगर बना भी दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय अगर वो उस देश में है, उस जगह है, तो वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का हिस्सा है। ये एक बहुत मुश्किल चीज है समझने की, पर जरूरी चीज है समझना कि इन दैट सेंस कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है वो पीपल के लेवल पर है, सिर्फ सिटीजनशिप के राइट्स पर आधारित नहीं है। जब पीपल के लेवल पर हम लेंगे तो सिटीजनशिप की राइट्स और ज्यादा रोबस्ट होंगी, मजबूत होंगी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर किसी ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कहने, पीपल कहने, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जिससे स्टेट आता है, जिससे राइट्स आती हैं, वो जो चीज है और वो जो स्पिरिट है, वो जो समझ है, वो अगर हम में वापस आती है, तो उस ताकत, उस पावर के खिलाफ, फैशिस्ट पावर या किसी भी तरह के मेन स्ट्रीम पार्टीज का जो एक तरह का रिचुअल पॉलिटिक्स को एक रिचुअल पावर बनाने की कोशिश होती है, ये लोग कहीं ज्यादा कमजोर पड़ेंगे। और उस तरह के पीपल्स पावर या पीपल एज अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पावर के सामने उनकी सोच बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएगी। लेकिन वो कदम उठाना जरूरी है, नहीं तो सिटीजनशिप की लड़ाई अगर सिटीजनशिप के अंदर ही हम लड़ते रहें, तो कहीं ये जो दूसरी मूव है ना, कि ये पूरी चीज को कहीं और लिया जा रहा है, लॉ के बियॉन्ड सोसाइटी के अंदर लिया जा रहा है, और सोसाइटी में इस तरह के बहुत ही गंदे कॉन्स्पिरेटोरियल लॉजिक्स बनाए जा रहे हैं कि कुछ लोग इंट्रिंसिकली कभी सिटीजन हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो कुछ एक आइडेंटिटी का नाम डाल दिया, वो ऐसे हैं। जो फैशिज्म हर समय करता है, जूस के साथ किया था, मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, किसी और के साथ हो सकता है, और कई इसमें ग्रेडेशन से, महिलाओं के साथ हो सकता है, दलित के साथ होता रहा है, कईयों के साथ हो सकता है, गे राइट्स की, गे और अल्टरनेटिव सेक्सुअल माइनॉरिटीज के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी ये फैशिज्म आ सकता है। ये सिटीजनशिप का एक पूरा गेम है कि हर समय सिटीजनशिप रहते हुए भी कुछ लोगों को सिटीजनशिप में थोड़ा कम करते करते ज्यादा सिटीजन, कम सिटीजन, करते करते सिटीजनशिप से बाहर। ये खेल चलता है सिटीजनशिप, हर जगह हुआ है, और इससे हम भी नहीं बच सकते। लेकिन इससे लड़ने के लिए सिटीजनशिप की लड़ाई लड़नी है, लेकिन उसके लिए ये कदम जो हम उठाना हमने शुरू कर दिया है। जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, कि प्रियम्बल में ये कहा गया वी द पीपल, नॉट वी द सिटीजन्स, तो मुझे लगता है वी द पीपल की बात को, इट इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट टू से इट, sing it, stutter it, whisper it, but in all of this, think about it. Think about it. अगर ये हम कर सकते हैं और खुलकर खुले मैदान में, शाहीन बाग में, दूसरे बागों में, सड़कों पर, बसों में, यूनिवर्सिटी के बाहर अगर हम कर सकते हैं, तो फिर किसी जेल में उतनी जगह नहीं है, किसी सेडिशन लॉ